internet, which is the fifth chapter of Unit-4. So Unit-4 is all about the contributions of key people. So internet के पीछे भी मतलब इंटरनेट जो कि वेबसाइट है उसके पीछे भी बहुत सारे contributors होते हैं, बहुत सारे key people होते हैं और उनके भी कुछ roles और responsibilities होते हैं, which we are going to cover in this chapter or in this video basically. ठीक है. अब contributions which are made by writer. तो contributors क्या है? Writer है, conceptualizer है, editor है और designer है. ठीक है. Any website in the net result of the combined effort of the team writer, conceptualizer, editor and designer. तो ये बताया गया है कि writer, conceptualizer, editor, designer, these are the contributors in website. ये internet मतलब website, कहीं भी word internet लिखा गया है that means they want to focus on website. ठीक है. फर्स्ट वेबसाइट कौन बनाया था? टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था. ठीक है. तो रोल ऑफ कंसेप्चुअलाइजर क्या होता है? फर्स्टली वो एक आइडिया, ठीक है, आइडिया को फॉर्मुलेट करता है और एक्सप्लेन करता है. ठीक है. क्रिएट्स एन आइडिया एंड एक्शन इंटेंडेड टू डील विद द प्रॉब्लम और सोल्यूशन. ठीक है. कमिंग अप द वेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दैट आइडिया. फर्स्टली यू हैव टू फोकस दैट वो फर्स्टली आइडिया भी लाता है और हाउ वी आर एग्जीक्यूटिंग इट, हाउ वी कैन एक्चुअली एग्जीक्यूट इट, उसका सोल्यूशन भी लाता है. तो फर्स्टली प्रॉब्लम भी लाता है जो कि एक आइडिया होता है और फिर उसका सोल्यूशन भी लाता है. कौन लाता है? कंसेप्चुअलाइजर लाता है. सो एज वी कैन सी फ्रॉम द डेफिनेशन दैट कंसेप्चुअलाइजेशन इज बेसिकली क्रिएटिंग समथिंग बाय thinking it. So creating something by thinking it is the definition of conceptualization. ठीक है. Before starting with your website we need to have an idea or a mental picture that what we want to do or what we are going to make. ठीक है. Everything that we see or use today has started with a thought or idea. Even the computer or laptop that you are busy working on was somebody else's idea or concept. Most people make the mistake of building an initial web presence before they really thought it through. So before creating it, they are saying that planning is necessary. This mistake then tends to linger because the established website can't easily be changed to accommodate the changes. So without planning, if you make a website, suppose this is your website which contains 3 web pages, and if you, after executing the website, you have uploaded that website as well, okay, in a browser. So in your browser you have uploaded it and then you realize that there are a few mistakes after going through it again and again because you have not planned before. So now you are facing the consequence. Now it is really tough to change, to update that pages of a website. Okay. So it is necessary that planning should be there for making it an effective website. And if planning is not there, then it leads to ineffective website, that rather than starting from scratch, which is a rough work. बोलते हैं ना, rough work. An effective website needs to be well thought out before construction. तो well thought out होना चाहिए. ठीक है. You really have to take some time with a pad of pen and start brainstorming the various elements that you see on the website and how they contribute to your business. Obviously these elements will be different for every business, but there are few things everybody should do before they begin building out their website. ठीक है. The underlying moniker, it's just written the same thing again and again, but the main focus is that planning is necessary. Firstly, planning is the first step. ठीक है. You should have a scratch before execution. ठीक है. Now your website should have 15 or 20 words positioning statement right across the home page. ठीक है. That concisely describes what you do in plain English. This positioning statement should be the key rich and should be included in your meta tags as well. In fact, the positioning statement along with a list of keywords should be close at hand whenever you add anything to your website. You list your keywords might to be a most important resource. ठीक है. When building your website, but few people ever make such lists. ठीक है. Before you even begin, you should compile the list and narrow it down to a few primary keywords. You can quickly get the list together. It's just written that what are the lists and all. We don't have to know any more about conceptualizer. Let's just focus on web designer. ठीक है. Web designer का काम क्या है? Now there are many roles in website making world. ठीक है. They are the ones who update, make the website attractive. It is possible to be several, if not all of these roles at once as one person. This question shall be answered, and these frame of mind that roles of making and updating a website has been divided into several people. The web designer is the person who controls the look and the feel of the website using website
कोडिंग एंड मार्कअप लैंग्वेजेस, तो कंट्रोल करता है वेबसाइट को बाय वेबसाइट कोडिंग और मार्कअप लैंग्वेज. देयर आर मेनी मार्कअप लैंग्वेजेस एंड एग्जांपल्स आर आल्सो गिवन एंड देयर आर मेनी website softwares as well. So basically what web designer does, it controls a website. That's it. Through what? Through markup languages and web design softwares. Graphics are sometimes provided but not always, in which case the website designer must create himself. Web designer is the one who keeps the other website issues in mind. दूसरे वेबसाइट के इश्यूज़ को जिसका उसके कोई लेना देना नहीं है पर तब भी वो याद रखता है, जैसे कि वो बोलते हैं ना, मिस्टेक शुड नॉट बी रिपीटेड. दूसरे के मिस्टेक से सीखो, अपने मिस्टेक के साथ तो सीखो ही, बट दूसरे के मिस्टेक से सीखो. तो दूसरे वेबसाइट जिससे उसका कोई भी लेना देना नहीं है, बट स्टिल वेब डिज़ाइनर याद रखता है दूसरे वेबसाइट के इश्यूज़ को भी, जिससे कि वो अपने वेबसाइट को इफेक्टिव बना सके. ठीक है. It should be noted that the web designer does not have to fix these multiple issues and are all optional. When designing of a designer has to think about all the different aspects and the elements that go into a site in order for it to be successful. इस वेबसाइट को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ भी क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, उसको सारे एलिमेंट्स और एस्पेक्ट्स को जानना चाहिए, वेब डिज़ाइनर को आना चाहिए. ठीक है. फ्रॉम अ डिज़ाइन पर्सपेक्टिव देयर कैन बी मेनी मेटाफोर्स फॉर प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ टू अदर्स. बहुत सारे वेज होते हैं जिससे कि हम लोग एक सेम इन्फॉर्मेशन को ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ in various things, like in a form of a documentary or in a form of proper video बोल सकते हैं, proper image. ठीक है. बहुत सारे वेज होते हैं जिसके थ्रू हम लोग एक इन्फॉर्मेशन पहुँचाए एक वेबसाइट के थ्रू. ठीक है. द पर्पस ऑफ द साइट कैन ड्रास्टिकली इफेक्ट विच elements are necessary and which can be done without. ठीक है. Design allows the information and the ideas to be communicated effectively by organizing them in a fashion भी involved रहता है. Everything is happening in a systematic manner. ठीक है. In an organized manner. ठीक है. Effectively understood by the intended audience. Design allows of your thoughts to come out in a form that can be understood by someone other that oneself. This concept is the basis of understanding the purpose design. Now communication is a word which is with a rich history. The term has come from the Latin word communicare, which means to share or to make something which is common. It becomes a part of English language in the 14th and 15th century. ठीक है. Learning how to communicate effectively in the basis of website design. So when a designer creates a website, the intent is usually to express something is there which is being expressed through website. That's all. Now editor का काम क्या होता है? Editor develops the content or the editorial plan, ठीक है, of a website. Now ना editor का काम होता है garnish करना. ठीक है. So it includes a creative director, a writer, a designer, and information architect. Web editor at different types of companies have varying responsibilities. Like their responsibilities are different in different companies. Sorry. Someone rtvillage.com, for instance, deals with major amounts of content and updates on a daily basis, or someone who's focusing on a particular style and original voice, provides an original voice. But if you work for a web developer that produces original content for different companies, your work will be more project oriented. You will develop materials for a range of clients, as well as ensure that the information is accuracy में or convey the true voice and tone of the site. The editor's work encompass CISA broad spectrum of writing, and can run the gamut from writing a short article of product description copy to creating a script. Copy editing and proofreading may also be a part of editing job. This is important. Copy editing or proofreading can be a part of editor job. Editor in the website world is very different job. It is one of the traditional print position. The online world is the one of interactive, which may involve creating single loop feedback such as real time. सो एडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद राइटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, बट स्टिल एडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अच्छे से बताया नहीं गया है. बट एडिटर्स एंड द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स आर हेल्पफुल फॉर एनी राइटर. ठीक है. देयर आर मेनी multimedia tools through which editing can take place, and it helps in making the website effective, attractive, and it garnishes the content of the website. It makes a website in such a way which hooks the attention of the visitors or viewers, we can say. And yes, an editor should have an understanding of certain background technology. उसको एक knowledge होना चाहिए about background technologies का. And if you are writing a copy for a e-commerce site, it's helpful to understand the functionality of how an online store works and how it operates before you actually write the materials for it. So you should know the HTML knowledge as well, which will help you to understand about the limitations of online media. ठीक है. What are the limitations and what are the
facilities which are being provided, right, through multimedia only. So they require a combination of editorial common sense and good writing skill. They should use their logic, and they should also use their good writing skill. They should have this quality as well. That's it. अब राइटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? राइटर इज द लास्ट वन. इसका रोल्स क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होता है? तो एक रीडर्स, मतलब जो हम लोग रीडर्स के बारे में देख रहे हैं, व्यूअर्स जो हैं, जो विजिटर्स हैं, जो वेबसाइट को रीड कर रहे हैं, लिटरली वो कर रहे हैं और वो बहुत हरी में, दे जस्ट वांट द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड देन दे जस्ट वांट टू मूव ऑन. सो दे डोंट हैव द पेशेंस फॉर obscure एंड कम्प्लेक्स टेक्स्ट. वो फैमिलियर वर्ड्स उन लोग के लिए इज़ इम्पॉर्टेंट. जो वर्ड्स अनफेमिलियर है उनको इतना टाइम लेके गूगल करके वो अनफेमिलियर वर्ड्स का आंसर निकालना, दे डोंट हैव टाइम बिकॉज दे आर इन हरी एंड दे वांट इन्फॉर्मेशन. सो इफ दे फील दैट दिस टर्म इज अनफेमिलियर, दे जस्ट डोंट रीड दैट line, they just skip to that part. So they don't enjoy scrolling through masses of text either. They also don't want, literally a lot of text. They just want a crisp information about something. That's it. ठीक है. Since there are millions of alternate websites in cyberspace, they will quickly move to another site. If they are not happy with your content which is being presented in your site, then they will move to another because they don't have patience. They are in hurry, right? So they won't enjoy the information which they are gathering from your or analyzing from your website. So they will move to another website because there are many websites available in cyberspace. So a website oversees the full process of the web design, copywriting, graphic and search engine optimization of internet website. ठीक है. वेबसाइट का जो कंटेंट होता है, राइटर इज अ पर्सन हु स्पेसिफाइज इन प्रोवाइडिंग द रेलेवेंट टेक्स्ट. इट प्रोवाइड्स रेलेवेंट टेक्स्ट, द टेक्स्ट विच आर रेलेवेंट. इट्स नॉट अननेसेसरी थिंग. जैसे कि अभी जो हम लोग भी रीड कर रहे हैं, देयर आर फ्यू पार्ट्स विच आर अननेसेसरी. इट्स नॉट रेलेवेंट, इट्स irrelevant. Then we are not enjoying it because it's not presented in attractive manner also. ठीक है. The key terms are also not highlighted, so we are not enjoying it while reading. So and we don't have any option for skipping this site and going to another chapter. We have to cover each and every chapter. But if I get the option, I would go to another chapter. I wouldn't select this chapter or this site which is presented very badly, in an unattractive manner, right? Their expertise lie in adapting themselves to whatever particular website demands. ठीक है. वो हर चीज़ में दे आर जस्ट लाइक वाटर. ठीक है. वो कोई भी कंटेनर में डालो उसका शेप ले लेगा. तो राइटर्स वही होते हैं. ठीक है. नाउ मोस्ट ऑफ देयर वर्क centers on marketing particular products or servicing and that sites and selling endorsing. Now the content should be presented again in an attractive manner. That are the keyword smart, meaning composition must be contained. The content should be relevant. It should not be unattractive. It should hook the attention of a visitor. ठीक है. That's all about internet. So we got to know that conceptualizer का काम होता है. Firstly conceptualizer का काम होता है आइडिया लाना प्लस एग्जीक्यूशन कैसे करे वो भी लाना. तो प्रॉब्लम लाना भी कंसेप्चुअलाइज़र का काम होता है और उसका सोल्यूशन लाना भी कंसेप्चुअलाइज़र का काम होता है. नाउ राइटर का काम क्या होता है? ठीक है. राइटर का काम होता है टू राइट कंटेंट विच इज़ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को अट्रैक्टिव मैनर में प्रेजेंट करना. दैट्स इट. ठीक है. और हम लोग ये भी लिख सकते हैं राइटर के अंदर दैट familiar वर्ड्स को यूज़ करना. ठीक है. familiar वर्ड्स को यूज़ करना जिससे कि ईजी हो एज अ विजिटर लैंग्वेज समझने में और इन्फॉर्मेशन समझने में और उसके लिए भी रेलिवेंट भी लगे. एडिटर का काम होता है टू गार्निश everything is done just to garnish it and editor can use, there are various templates which can be used by the editor so that the website look really attractive. designer भी वही काम करता है, templates ऐड करना. पर एडिटर क्या करता है ना, एडिटर का दूसरा काम मतलब गार्निशिंग में ही आ रहा है, बट दूसरा काम है दैट वो एक्यूरेसी में भी काम करता है. ठीक है. और वो फीडबैक भी लेता है और वो दिमाग में भी रखता है कि हाउ HTML नॉलेज रखता है अपने दिमाग में और अपना कॉमन सेंस एज वेल एज गुड राइटिंग स्किल्स यूज़ करता है. दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. एडिटर, राइटर और कंसेप्चुअलाइज़र, ये 4 कंट्रीब्यूटर्स के कंट्रीब्यूशंस यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में हम लोग को पता चला इन दिस चैप्टर. इंटरनेट यानी कि वेबसाइट में जो उनका कंट्रीब्यूशन था वेबसाइट में. दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर विच वॉज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ Unit 4 एंड दैट्स ऑल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.